studies. So today we are going to begin with the lesson number 8, that is multimedia and internet. So let's begin with this lesson. So in this lesson we are going to study about the multimedia. Second, we are going to study about multimedia system. Then we are going to study about uses of multimedia कि हमें multimedia के क्या-क्या uses होते हैं. Then we are going to study about the internet that you always scroll on your, because of internet you can scroll on your phones, laptops, PCs. Now what are the uses of internet? Then we are going to study about the terms related to the internet. So here, well, not as fast as your emails today. Perhaps telegrams took a day or two to reach, depending on the distance. So here, a girl is, her mother is saying, अब तुम्हारी ईमेल की तरह तो इतना फास्ट नहीं है, बट हमारे टाइम पे जो टेलीग्राम होता था उसे 1 दिन या 2 दिन लगते थे रीच होने के लिए, किसी को अगर हम सेंड करते थे तो. फादर ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट अर्लियर द क्विकेस्ट वे टू कम्युनिकेट टेलीग्राम, हाउ वर्ड टेलीग्राम, हाउ फास्ट वर दे. सो हियर द स्टूडेंट वाज आस्किंग फ्रॉम हिज फादर दैट मेरे ग्रैंडमदर ने मेरे को बताया था कि जो क्विकेस्ट वे थे टेलीग्राम के हमारे टाइम में वो क्या थे, वो क्विकेस्ट वे थे कोई भी मैसेज सेंड करने के टेलीग्राम थे. क्या वो फास्ट थे? द मदर वाज सेइंग इतने फास्ट नहीं थे जितने आजकल ईमेल्स होते हैं, बट उनको 1 से 2 दिन लगते थे. नाउ हियर लेट्स स्टार्ट विद मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया, द कंप्यूटिंग मल्टीमीडिया मींस साउंड्स, पिक्चर्स एंड वीडियोस इन एडिशन टू द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. इसका क्या होता है? इन कंप्यूटिंग में मतलब मल्टीमीडिया का क्या होता है? साउंड को यूज करना, पिक्चर्स को यूज करना, वीडियोस को यूज करना टेक्स्ट के साथ. स्क्रीन पे न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया. ये डिफरेंट टाइप्स की मीडिया है. सो दे यूज मीडिया एलिमेंट्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. ये क्या यूज करते हैं? मीडिया एलिमेंट्स का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए. सो मीडिया एलिमेंट्स इंक्लूड टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस. इसमें टेक्स्ट होते हैं, साउंड्स होते हैं, पिक्चर्स होती है, ग्राफिक्स होते हैं और एनिमेशंस होते हैं. When all these elements of media are used together, it's called multimedia. जब ये सारे elements आपके एक साथ यूज होते हैं उसको multimedia कहते हैं. Now let's talk about multimedia system. So a computer which is capable of presenting multimedia applications is called a multimedia system. जो एक कंप्यूटर हमारा सिस्टम जो ज्यादा कैपेबल होता है, इतना कैपेबल होता है कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं, उसको मल्टीमीडिया सिस्टम कहते हैं. So multimedia contains different hardwares given in the picture ahead. Different hardwares होते हैं उसमें. Like let us revise their functions. उनके functions क्या होते हैं? So speaker क्या होता है? A speaker card, a sound card and speaker are to get voice output. इससे क्या होता है? हमें voice output मिलता है. CD, DVD से to play CDs and DVDs को play करने के लिए. Monitor to display the animation and pictures. ये क्या डिस्प्ले करते हैं? आपकी एनिमेशंस और पिक्चर्स को डिस्प्ले करते हैं. माइक्रोफोन एंड हेडफोन to record and play the voice sound. ये किस लिए यूज होता है? रिकॉर्ड करने के लिए, प्ले करने के लिए आपकी वॉइस साउंड को. जॉयस्टिक्स टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. इसकी हेल्प से हम गेम्स खेल पाते हैं अपने कंप्यूटर पे. नाउ these are the speakers, CD DVD drive, this is monitor, this is microphone and headphone, this is the joystick. Now let's study about uses of multimedia. क्या uses होते हैं multimedia के? So if the information is given to us in a form of text only, it would be uninteresting. अगर हमें खाली एक टेक्स्ट दिखा दे, पिक्चर का आपको एक बुक में टेक्स्ट मिल जाए, वो आपको इंटरेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी. पिक्चर से आप इंटरेक्ट करते हो ना कि ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है. So if the graphic, music or sounds are added to the same text, the information would be remembered for a longer period. अगर हम उस टेक्स्ट में ग्राफिक्स डाल दें, म्यूजिक डाल दें, आप उसे बार बार याद रखते रहोगे, बहुत टाइम तक याद रहेगा वो आपकी मेमोरी में. So multimedia technology nowadays is used in every field throughout the world. हर फील्ड में यूज होती है मल्टीमीडिया. एजुकेशनल में भी, मूवीज में भी, प्लेइंग गेम्स में भी, हर जगह मल्टीमीडिया यूज होता है. Multimedia programs are used in different areas for different tasks, such as for imparting education के फील्ड में यूज होती है. Playing and listening to music, प्ले करते हुए, लिसन करते हुए म्यूजिक के लिए यूज होती है, मतलब प्ले करने के लिए, म्यूजिक को लिसन करने के लिए. Watching movies, if you want to watch movies, that is also multimedia. Advertising में यूज होती है. Then for playing games, for professional printing. So there are a number of multimedia educational programs available on CD, DVD-ROM and DVD-ROM.
So they are as follows like multimedia, science, atlas, encyclopedia, and space and universe. Now let's study about internet. Internet क्या होता है? Internet is a technology through which millions of computers are connected to one another to share information. ये क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू millions of कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड है शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन को. वी गेट एन एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जस्ट इन फ्यू सेकंड्स थ्रू इंटरनेट. हमें पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन किसके थ्रू मिल जाती है? एक सेकंड में इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है. सो इंटरनेट हैज मेड लाइफ मोर इजियर एंड मोर कंफर्टेबल फॉर द पीपल इन द वर्ल्ड. इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजियर बना दिया. यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर siblings sitting in another country, or you can talk with through video calls. You can do many things. So ये किस वजह से हो पाता है? सिर्फ इंटरनेट की वजह से हो पाता है. इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजियर कर दिया है. इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर बाय मींस ऑफ केबल्स, वायर एंड वायरलेसली. कैसे कनेक्टेड होता है? केबल्स के थ्रू भी कनेक्टेड होता है, वायर्स के थ्रू भी कनेक्टेड होता है, वाईफाई के थ्रू भी, वायरलेसली भी कनेक्टेड होता है. देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ द इंटरनेट. बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है हमारे इंटरनेट की. ई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज द नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग. जो ई बैंकिंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, उसको हम नेट बैंकिंग भी कहते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट? क्या क्या यूजेस होते हैं इंटरनेट के? देयर आर मेनी रीजंस फॉर पीपल टू यूज इंटरनेट. कम्युनिकेशन विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड क्विकली हैज मेड इंटरनेट वेरी पॉपुलर. जो कम्युनिकेट कर पाते हो आप इंटरनेट के थ्रू, इससे आप बहुत ज्यादा इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इंटरनेट बहुत ज्यादा. सो लेट अस स्टडी सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ इंटरनेट. फर्स्ट यूज क्या है? सर्चिंग. आपको कुछ भी सर्च करना होता है आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, गूगल के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर के थ्रू, क्रोम के थ्रू, मेनी अदर्स. सो वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू द वेबसाइट व्हिच आर अवेलेबल इन द इंटरनेट. ई बैंकिंग, we can easily do banking transaction through electronic banking or without going to the bank. हम बैंक जाए बिना भी transactions कर सकते हैं ई बैंकिंग से. ईमेलिंग, we can send and receive letters and messages over internet. हम send कर सकते हैं, receive कर सकते हैं letters को, मैसेज पूरे इंटरनेट पे, मतलब मैसेजेस को और पूरे इंटरनेट पे. सो वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग टू म्यूजिक. So internet has a wide collection of songs and movies. We can even download them. इंटरनेट पे बहुत सारे कलेक्शन होता है म्यूजिक का, मूवीज का. इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं. ऑनलाइन एजुकेशन में यूज होता है. As the study materials and any information related to studies are easily available on the internet, online education has become popular. जो आजकल आपका हर स्टडी मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है. हम कांटेक्ट कर पा रहे हैं, you are seeing me because of the internet only. So now let's talk about careers. All kinds of jobs are available on the internet. हर टाइप की जॉब अवेलेबल है आपके इंटरनेट पे. Next is shopping. You can do online shopping. Shopping these days have become quite easy through internet. You can order the things and they get delivered at your doorsteps. आप order करते हो, आपके door पे आ जाते हैं वो. Shopping on internet is called e-shopping. That is electronic shopping. जो आप shopping करते हो उसको हम e-shopping कहते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू करते हो. Now reservation. You can book your tickets. You can reserve your seats through internet. Tickets for airline, railway and bus can be reserved through internet. Now an email address is a unique identifier to send and receive emails over the internet. ये unique identifier होता है, आपके जैसा किसी और का नेम email address नहीं होता. So ABC, for example, abc@example.com. Now let's talk about terms related to the internet. क्या क्या terms related है आपके इंटरनेट से? There are some important terms related to the internet which we must learn. They are as follows, like World Wide Web, that is www.World Wide Web. So this is a collection of websites. Collectively, these sites form a structure which is similar to spider's web on the internet. ये क्या बनाते हैं? कलेक्शन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जो किसकी तरह सिमिलर होता है? स्पाइडर की वेब की तरह. Now web browser, this is software which is used to get information. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है on the internet. Given ahead are the names of pictures of some popular web browsers. These are the pictures of popular web browsers like Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini and Safari. So इन पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो. वेबसाइट्स, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस व्हिच हैव रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ये क्या होता है? कलेक्शन होता है वेब पेजेस का जिनको रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. दिस इज लाइक अ बुक हैविंग मेनी चैप्टर्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. किसकी तरह होता है? एक बुक की तरह होता है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं. So many people develop their own website for specific purpose and update it from time to time. बहुत सारे लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, उसे अपडेट करते रहते हैं time to time. Now web page.
The page on the internet which has the information is called web page. जो पेज है आपके इंटरनेट पे जिसकी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम वेब पेज कहते हैं. वेब पेज इज डिजाइन बाय वेब डिजाइनर. वेब डिजाइनर्स उसको डिजाइन करते हैं. सो डिजिटल मार्केटर्स भी डिजाइन करते हैं. Apart from data and information, a web page can also contain text, images, graphics, audio, videos, etc. इसमें आपकी text होती है, images होती है, graphics होती है, audios होती है, videos होती हैं. Now let's talk about hyperlinks. Hyperlinks, that is, so a web page has many links to a topic. बहुत सारे links होते हैं एक topic से. So these links are called hyperlink. उन links को हम hyperlink कहते हैं. Hyperlink can be a word, a picture, or an icon that move user from one web to another. या एक word हो सकता है, picture हो सकती है, एक icon हो सकता है जो एक user को एक web से दूसरे web पे ले जाता है, web page पे ले जाता है. Now let's talk about home page. So this is the main page of the website. जो एक home page होता है, main page होता है, ये आपकी website का जो एकदम open होता है, ये आपको दिखता है. When we open a website, the home page is seen on the screen. जब आप open करते हो किसी भी website को, home page आपको उसकी screen पे दिख जाता है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.